बारिश होने लगी। Yesterday, we read Plato, Aristotle, Machiavelli. Is it raining? No, Machiavelli. Then John Locke, Hobbes, J.S. Mill, T.H. Green, नहीं T.H. पढ़ा है। Green, okay. Karl Marx, I think political science is incomplete without Karl Marx. yes, Gramsci, Hannah Arendt. Huh. See, these are the basic thinkers which, We have read in Western philosophy. right? Western philosophy. Yes. Hmm. She is the only woman thinker. And she is famous for what? Totalitarian thoughts. Totalitarian in what sense? What sense means political one? Hmm? Political. Political or and something more. She was during the Hitler period. So this is no. She has given us in triad, Labor work. labor, work, and action. Right? Does she support public participation in politics? Yes. Her main sphere is participating. Okay. She also talks about deliberative participation. What do you mean by deliberative participation? Their discussion used to take place. Debate and discussion. Yeah. Who and tell me other thinker who is talking about the same thing, deliberative discussion. Any other thinker who has talked about the same thing, deliberative discussion. He is very famous. Is it dialect? He is Indian origin. Indian. लेकिन यार अमन रॉय Amen, right? रेडिकल बन Amartya Sen. हाँ Amartya Sen is which kind of is it liberal or socialist or what? Marxist. सोशलिस्ट Yes, he is social liberal. What do you mean by social liberal? मतलब whose ideology is used to talk both liberal as well as socialism. No, this is not social liberal. No. मतलब it talks about the individuality freedom with a what capability approach to develop the Capability approach, that is right. No, I'm not talking about Ahmad Sen. I'm talking about what do you mean by social liberal basically. Means, what does this concept mean? I'm asking this. liberty and social sphere. Liberty in social sphere नहीं है. मतलब I'm just deconstructing the words. What do you read yaar all the 24 hours? Not 24 hours, only 4 hours. I am doubting now that what do you read, what do you do in your room? Are you watching web series? No. Then what? See, they support state intervention, but state intervention should be in what? Social development, like health, education, capacity. This is the basic outline of this. Social liberal. Tell me other thinker who is social liberal here.
apart from Amartya Sen. J.S. Mill. He is a positive liberal. Negative liberal. He is a negative liberal. This positive liberal. He is a positive liberal. Now tell me who is social liberal. He is famous for justice. John Locke. No, yeah. No, he cannot afford justice. Rawls. Yes, Rawls. इतने सारे नाम हैं, इतने सारे So शब्द this is हैं. hard. I am telling you the way how to recall. Rawls. You have to take out one paper and pen, and then you have to write the thinker. Then you have to link. This is what I am telling you, right? Now, what is it? Who is that? Who was it? It was she. The name, something name was written. What? Junk call. Huh? Junk call. अच्छा अच्छा. No problem. Mosquito. Yeah. बारिश हो रही है, जल्दी जल्दी. I was where? Karl Marx. Yesterday I have talked about something. Tell me any extra thing about Karl Marx. I mean, if you have read. See, he has talked about class struggle. Then historical materialism. Yes. What is this historical materialism? मतलब कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ही रिलेटेड विथ हिस्टोरिकल द हिस्ट्री विच हैज़ हैपेंड. मतलब tell me the central point. The history which happened what? Historical materialism. What does this basically? Yeah, see, I think one mistake. I think you do that. You do not. I think see you read, but I think you are not able to express the things. Contemplate the things. Yeah, you are not able to express what अरे you पहले know. मैं रीड करूँ वो पता नहीं, वो पूरा पहुँच हो जाता है. Yes. अरे it will take at least 4 to 5 readings, then I will able to recall those words or But I think basic principle you can remember. Yeah. See, historical materialism means that matter has been moving from the history. It means that from the ancient time this process has been going on. See, first man has started thinking or man has started eating. Tell me, because see, to think one needs to eat food, or one needs to eat food to think. Tell me what is it? think then it. Or eat then think, because he will gain energy, then he will think, or he will think, then he will earn money and he will get food. Tell me what is more important. Think and eat. No. Eat and think. Yes, this is historical materialism. Means matter derives the world. Also. If you have money, then you are something, otherwise you are nothing. This is what is that. Tell me what about Gramsci? Have you said anything about Gramsci? Or do you know anything about Gramsci? Gramsci. And he is famous for what? Gramsci. He is from Italy, na, that person. Italy, Machiavelli है. अरे मुझे याद था Gramsci. हेजोमनी के लिए फेमस है. अब now tell me what is He is हेजोमनी? neo-Marxist person. हाँ, अच्छा हाँ. neo Marxist. And he has given very basic theory, that is hegemony. Tell me what does this word mean? क्या हुआ? That's why I said you to repeat the whole thing. I did not give you पहले name. कंप्लीट हो जाए then I will repeat. पीछे का गायब क्यों हो रहा है? Hegemony do not know. Hegemony means Domination ideological domination basically. Tell me an example of India where India is good in the hegemony around the world. Buddhist ideology. No, not all the world. It is just in a separate. Yoga. हाँ. Yoga is the best because due to that, all over India celebrate yoga on 21st June. This is the best example of soft power as well. इसी को soft power भी बोलते हैं hegemony को. Yes.
you might have come across a thinker named Hegel. Hmm. Tell me, what do you know about him, Hegel? वो स्टेट पर फोकस करते हैं। ये बस यही लिखेंगे, सिर्फ फोकस अरे तो करते हैं। हेगल और कांत ऐसे लिखा था, तो हेगल में एरो करके स्टेट, देन कांत में सोसाइटी। हाँ, वो तो कंपेरिजन है Yes. कि हेगल और कांत में ये स्टेट को इम्पोर्टेंस देता है हाँ, और ये जो है ना सोसाइटी को, Yes. क्योंकि ये बोलता है कि सोसाइटी से तो स्टेट बना है। तो हेगल किसका, हु हैज सेड स्टेट इज मच ऑफ गॉड ऑन अर्थ है। हेगल। हाँ, मतलब गॉड मतलब डिवाइन थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है ये भी, समथिंग लाइक प्लेटो। हाँ, आइडियलिज्म की तरफ। हम्म। Do you remember the name of any book of Karl Marx? कार्ल मार्क्स। कार्ल बहुत मार्क्स। फेमस बुक लिखा है यार। एक बुक मैं भी लिख रहा हूँ ना, पॉलिटिकल फिलोसफी पे। स्टेट्समैन इसी की है। स्टेट्समैन इसकी नहीं है, वो तो उसकी है, कौटिल्य के। स्टेट प्रॉट तो वो उसकी है, मैकियावेली की है। इसकी दास कैपिटल, दस का। मतलब और भी बुक उसने लिखा है, लेकिन दास कैपिटल इज Famous वन ऑफ द बुक। नहीं तो टेल मी हु इज थिंकर इज पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्टिक, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। हाँ, मैंने पढ़ा है। ये जो वो थोड़ी क्या कहते हैं, जो जैसे डेमोक्रेट आई एम नॉट डेमोक्रेसी की बात सेटिस्फाइड करते हैं, नॉन आई एम डेमोक्रेसी की नॉट बात करते हैं। सेटिस्फाइड विद द वे यू हैव स्टडीड। अरे वो भी कोई याद नहीं यार, क्या बताऊं। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के लिए हॉब्स फेमस है। हॉब्स जस्ट स्टडी आई टॉक्ड अबाउट हु हैज टॉक्ड अबाउट सोशल कंट्रैक्ट, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी। हॉब्स। हॉब्स, यस, गुड। हॉब्स। अब आप वर्ड से पूछ रहे हैं ना, जो मुझे भूल जाता है, यही मैं बैठ कर याद करती हूँ। नहीं तो मैं कल का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा अंदर जा रहा हूँ अब। अगर मैं नया टॉपिक करता तो मैं ऊपर ऊपर ही जाता है। सिंस आई एम टॉकिंग ऑफ द स्टडी टॉपिक। इज इट रेनिंग और व्हाट, समझ में नहीं आ रहा। Raining। तो हम लोग को पानी तो नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई, ओके, दैट्स गुड यार। टेल मी एनी बुक ऑफ जॉन लॉक। Didn't remember। हु इज फादर ऑफ लिबरलिज्म। लॉक। जॉन लॉक। एंड नियो लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म वो रॉबर्ट नोजिक है ना, वो बात Nozick। रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, मार्केट फंडामेंटलिस्ट है वो। नॉलेज। आज के टाइम में न्यू लिबरली तो फैला हुआ है। एलपीजी। पार्टिसिपेट है। एलपीजी। हाँ, ये उसी एग्जाम्पल है। इसकी एक बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इसकी एक बुक का नाम है ट्रू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ये इसकी जो है एक अच्छी फेमस बुक है। ही इज हाईली इंडिविजुअलिस्टिक है। ही इज हाईली इंडिविजुअलिस्टिक है। हाईली मीन्स एक्सट्रीमली टॉक्स अबाउट इंडिविजुअलिज्म। आई इंडिविजुअलिज्म। थिंक वी कैन यार